Good morning, students. Welcome back to the part 2 of Company Act. As I have promised you that I will going to show you the different ways how you can register your own company. So, coming on this, and I have said earlier also that I always want to use the sites that are governed by Government of India. So this site is mca.gov.in. This means Ministry of Corporate Affairs. Okay, as you open the first page and you come on the home index, you will able to see that how I can register my company. This is the first question is here. Okay, so I have already gone through this. This is my the second part. Now, अब इनको इन चीजों की रिक्वायरमेंट। The first is your digital signature. The second is your e-filling form. So this is your e-filling form and you have to complete it anyhow. Okay, so you can download your e-filling forms and downloads like this. तो आप एमसी सर्विस पे आ जाओ। अब अगेन अगर आपको वो फॉर्म फिल करना है तो क्लिक हियर और दिस इज अ पीडीएफ। इसको आप अगर क्लिक करते हैं तो आप इस फाइल पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली और यहां से आपको वेबसाइट आराम से मिल जाएगी। देन फिर यहाँ पे बेटे ये आपसे पूछ रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स हैं। डायरेक्टर्स का फॉर्म मांग रहे हैं आपसे, आपके टैक्स का फॉर्म मांग रहे हैं आपसे, आपकी कंपनी की एसोसिएशन का फॉर्म मांग रहे हैं आपसे, आपने जो पेमेंट करना है, जो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाके कोर्ट से जाके ई स्टैम्प्स बनवाई हैं वो यहाँ पे ये कह रहे हैं। फिर कहीं जाके इतने फॉर्म जब आप फिल कर देते हैं तब जाके आपका सबमिशन होता है। अब आप इस पोर्टल के बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ जहाँ पे आपने ई फिलिंग लिखा, ठीक है। ई फिलिंग जब होती है तब फिर यहाँ पे बेटा एक बार डाउनलोड किया जाता है। ये पूरा फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाता है। देन यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाते हैं, नीचे अमेंडमेंट आ जाता है और फिर आप इसको डाउनलोड कर। देन ये आपसे आपकी आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपने यहाँ पे जाके फॉर्म फिल करा होता तो आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा। फिर इसका बेटा सबमिशन होता है, ठीक है। सबमिशन के लिए अगेन आपको ई फिलिंग में जाना है और ये आपसे बताता है कि किस तरह से हम इसको सबमिट कर सकते। तब आपका वर्चुअल फॉर्म जो आपने भरा है वो आप देख सकते। देन अब आप अपना बेसिक फॉर्म भर लेते हैं। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा ऑलमोस्ट लाइक 40 to 45 डेज। आप इसके लिए फिर कंपनी एक्ट के एसोसिएशन मींस ऑफिस में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर सिटी में अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होते हैं इनके। आप वहां पे भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले जा सकते हैं। ऑल्दो देयर आर सम एजेंसीज आल्सो। देखिए एजेंसीज में क्या होता है बेटा कि दे हैव अ वेरी ट्रिकी थिंग्स। वो फटाफट आपके कागज बनवा देते हैं। दे विल आस्क सम चार्जेस अगेंस्ट दैट, बट फॉर अस it is very difficult to take time and to get each and everything done on the tips। अगर आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, अगर आप सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो आपको पता है कि what are the basic requirements to fill the company forms। अगर ऐसा नहीं, so I have gone through various sites, but let me show you the one of the sites that are being used by n number of people। So this is Udyam registration। Then this site is particularly used for microfinancing। As I have told you that microfinancing is also done। तो अगर आपको कोई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन मीन्स आपको कोई पार्टनरशिप या आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगानी है और आप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप कोई माइक्रो फाइनेंसिंग की यूनिट स्टार्ट करें, सो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस साइट। इसे कहते हैं ई उद्योग। E-Udyog is also a site that is governed by Government of India। ओके, अब E-Udyog जो साइट है ये आपको यहाँ पॉपअप्स भी दिखा रहे हैं कि जो लोग वेरीफाई होते जा रहे हैं। आप
आप इन पे जाके अपना पूरा नाम भर सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं। ये प्रॉपर एप्लीकेशंस हैं। आपको अपना इसमें अकाउंट नंबर, संगठन मीन्स कि आपकी श्रेणी क्या है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। I will just going to read each and everything. Your name and your mobile number, your email ID, your office address, your PIN code, your state and your district. Your category. Category is like कि journal SC ST OBC. Organization means कि अभी हमने पढ़ा है, basically अभी हमने read करा था, that is point number 4 in my previous slide. हमने क्या देखा था? Public limited, private limited, one person entity, self approves, government department, trust, others. इनमें से कौन सा? ठीक है, तो अगर मैं अकेली हूं तो मैं प्रोप्राइटरशिप के लिए जाना चाहती हूँ। देन आप अपार्ट फ्रॉम दिस ये आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछ रहे हैं, अकाउंट डिटेल है, बिजनेस का नाम आप जो रखना चाहें, कोशिश करिए कि उसमें किसी का पेटेंट ना हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पेटेंट? मैंने फर्स्ट टाइम इस वर्ड का यूज करा है और आई जस्ट वांट टू क्लियर हियर इटसेल्फ, पेटेंट इज द राइट दैट नोबडी एल्स कैन यूज दिस पर्टिकुलर नेम। अगर वो यूज करता है तो आप या वो व्यक्ति उसको कुछ पैसा मिलेगा, वो नहीं तो अदरवाइज आप उसके नाम को या आप उसकी इमेज को या आप उस तरह की चीजों को यूज नहीं कर सकते। इफ यू आर लुकिंग और यू आर वाचिंग शार्क टैंक, तो देयर एन नंबर ऑफ पीपल्स हु आर सेड कि मैम हमने इसका पेटेंट लिया। So patent means that you are the one and you are the right now only user. अब जो सेकेंड होंगे वो फॉलोअर्स कहलाएंगे, they are not the leaders. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट इनिशियली मार्केट में चल रहा है लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। It could be the possibility. For an example, let me take you the example of ISKCON. ISKCON ने पेटेंट कराया है राधे राधे। इनिशियली तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन इंडिया जस्ट थिंक आफ्टर 20 or 30 years, देन तो चेक है वहां पे कि क्या क्या चीजों का पेटेंट हो सकता है, क्या क्या चीजों का पेटेंट नहीं हो सकता है। इस तरह से बेटा पेटेंट्स का यूज किया जाता है और पेटेंट्स रजिस्टर कराने के लिए अपनी गवर्नमेंट साइट सेम आप चाहें तो किसी से हेल्प ले सकते हैं। ये डायरेक्ट पार्ट नहीं है अभी आपके लॉ के पेपर का, बट श्योरली इफ समबडी वांट्स टू गेट पेटेंट, यू जस्ट गिव मी द व्हाट्सएप that you want to get it patent, I'm going to help you with the patent sites also. और अगर आपसे नहीं होता है तो फिर you can hire someone. So this is one of the various examples that I have created here, that how you can register either a manufacturing unit with the help of mca.gov.in, or you can for microfinance you can go to this उद्यम registration. ई उद्योग भी कहा जाता है। देन नाउ ये एक साइट है जो कि आपके लिए ये दोनों काम करके देती, ये भी और ये, दिस एंड दिस बोथ, एंड दिस इज अ सीए साइट्स, ये करके देंगे एंड ये आपसे वो चार्ज करें। So this is that. Then तो ये आपके लिए सब काम करके आपको दे देंगे और यहाँ पे आप देखिए इन्होंने आपसे कोई डिटेल नहीं मांगी है, ठीक है। ये कह रहे हैं बस आप फॉर्म भरना शुरू करें। आप जैसे इसे भरते जाएंगे ये आपसे बात करेंगे और बात करके आपको चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ प्राइवेट साइट, बट दे डायरेक्टली लिंक्ड टू द वेरियस ब्लॉक्स। देखिए और भी होती होंगी, बट आई हैव कंसीडर्ड दिस साइट इन एन नंबर ऑफ केसेस जहां पे मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स को इससे अच्छा फीडबैक मिला है। सो दिस कुड बी द वन ऑफ द साइट्स, बट यू हैव टू स्पेंड द मनी। सो दिस इज द इजी वे, आप इसमें डिटेल्स भरिए। नाउ कमिंग बैक टू द सेम, बिजनेस का नाम कब से कर रहे हैं या कब से करना चाहते हैं। देन
अब ये पूछ रहा है कि क्या है, बना रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, या सिर्फ सामान बेच रहे हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं? व्हाट आर द ट्रेडर्स डूइंग? दे आर परचेजिंग एंड दे आर सेलिंग द थिंग्स। फिर वो आपसे आपकी डिटेल पूछेंगे, डन, कि अपने बारे में बताइए, ठीक, कि कितने लोगों को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, औरत कितनी, आदमी कितने, और भी कोई है, और यहाँ पे टोटल अपने आप है। ठीक, आपका पैन कार्ड मांग रहा है, आई एग्री पे टिक कर दीजिए और सबमिट पे टिक कर दीजिए कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है, और उसको सबमिट। Once you submit the application, you will getting a notification on your email IDs. Or initial notification, thank you for filling this form, है ना? This notification automatically comes to your messages also, and they provide you the registration link, so that next time there is no mandate for remembering your registration number and your password. Every time you go to the email ID, or you just go to your message box and you just click that particular button, you will be getting a same page each and every time. So you can start from whatever you want. Don't need to update the fresh ones. So this is a very easy and a very simple process. Now, these are the basic things that has been written in the MCA sites. कि बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी ये सारी चीजें होती है। नाउ अब वो क्या कहते हैं कि व्हाट आर द साइलेंस फीचर्स। तो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एक्सिस्टेंस है कंपनी की। कंपनी किसी के साथ नहीं है, कंपनी इज अ होल सोल फुल अथॉरिटी। कंपनी इज अ होल सोल फुल अथॉरिटी। So company has their separate PAN card, separate account number, okay? It is not required. आप हैं, आप नहीं भी होंगे, the company will remain. लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, owner will change, the company will remain as it is. Done? So this is an independent and outstanding feature of a company. Now there is a case of House of Lords in the Salmon. This case is being recorded. ये मैंने केस लिया है इंडियन कानून साइट से। I have always told you कि whenever you are taking any case, try to take it from an authorized site. So this case I have recorded from the site Indian कानून। Done? तो ये केस किसका था? ये केस डिसीजंस का था और मेंबर्स का था, जहां पे हमको ये समझ में आ रहा था कि कंपनी जो है वो इंडिपेंडेंट, कंपनी किसी के लिए नहीं है, कंपनी से लोग। देन सो ये केस मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया आप लोगों के लिए कि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं इस केस की। ये वो केस है जब भी आइडेंटिफाई हुआ और ये डेफिनेशन बहुत क्लियरली मेंशन करी गई दैट कंपनी इज इटसेल्फ हैज एन ओन आइडेंटिटी। फॉर एन एग्जांपल, रतन टाटा, डन, ही इज रनिंग टाटा, कोई बेटा नहीं है। Once the Ratanji is not with us, company will remain. Somebody else will run the company. Company will not shut. So this is a proper example जहां हमें ये समझ में आता है कि अगर किसी का कोई नहीं भी है तो भी वो चीज चलती रहेगी। कोई लीडर आएगा, कोई ओनर आएगा जो डायरेक्शंस लेगा, डिसीजंस लेगा, बट कंपनी विल रिमेन एज इट इज। पीपल मे कम, पीपल मे गो। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज परपेचुअल सेशन। सो परपेचुअल सेशन in an incorporated company, we have field that it never dies.
So this is known as perpetual sessions. So this particular word, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि लोग आएंगे और लोग चले जाएंगे. So this particular word is known as in the legal term perpetual session. Clear to everyone? Again, there is a case. So this case has been highlighted in Indian Qanun side. The case is called Gopalpur Tea Corporation. So you can go to this particular case, you just click the screenshot and you just go through this particular case in Indian Qanun website and you will be getting a whole link. मैं आपके लिए एक बार करके दिखा देती हूँ so that it would become easy for you. Just copy this. The same notes has been transferred to you. Move to the Indian Qanun site. Indian Qanun site, I have already told you, that is a very good site for search in the case of law related results. ये आपसे कह रहा है कि अभी मेरे पास ये नहीं है, आप अलर्ट दे दीजिए, लॉग इन आईडी फिल कर दीजिए अपनी एंड इट विल गिव इट बैक. देन ठीक है, और इनको थोड़ी और डिटेल्स चाहिए होंगी तो ये आपको फटाफट लाके दे देंगे. ऐसे आप केसेस यहाँ डाल डाल के सर्च कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, केसेस रिलेटेड टू कंपनी एक्ट. आगे डन. देखिए ये एमबीए वाला केस, मुंबई वाला केस, ये अभी मैंने आप लोगों के साथ बताया था. सेम केस है ये बेटा. ठीक है, आप किसी भी केस को क्लिक करिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे केसेस मिल जाएंगे इसमें. एंड केस स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ. अनटिल अनलेस आप रेगुलर बेसिस पे केस स्टडी नहीं रीड आउट करेंगे तो आपका जो प्रैक्टिकल लर्निंग वाला पार्ट है वो इनहेंस नहीं. इन क्लासरूम सेशन और इन वीडियो सेशन हम कोशिश कर सकते हैं, जस्ट ट्राई एवरी टाइम कि मैं आपको कोई प्रैक्टिकल लर्निंग वाला पार्ट दे पाऊँ, बट इट इज नॉट दिस सफिशिएंट फॉर योर एडिशनल लर्निंग्स. So you must go through the case studies. You can get any other site also. This is the site that I have used. You can go to any other site. The best is there are two books, Kuchan and Tulsi. So they contain some caselets like 4 stanza of cases, and they will also are very helpful while studying business law or mercantile law or legal aspects of business. So you can take the help of these two books also. They are Indian author books and they are very helpful because they are having a case list. I cannot say they are having a case, they are having a case list of 4 line cases. Okay. So coming back, separate property of a company. Yes. Company has their own assets. कंपनी itself में भी एक एसेट है, but company is capable of owning their own assets. In the case of winding up of a company, जब भी कंपनी बेटा वाइंड अप होती है, let me give you the example. जब कंपनी लिक्विडेट होती है, in the liquidation of the company, company assets are disposed of. Okay. This topic we have already done. कि कैसे लोगों को कंपनी के एसेट डिस्पोज ऑफ करने पड़ते हैं. इवन टेबल, चेयर, फर्नीचर, दीज आर आल्सो कंपनी एसेट्स. भाई कंपनी है तो ये चीजें हैं तो दीज आर आल्सो कंपनी एसेट्स. सो दे कैन बी आल्सो डिस्पोज ऑफ. इफ यू आर हैविंग एनी एफडी, if you are having some structure or some infrastructure properties,
You are owing the capitals. So there can be a joint partnership also. It could be the possibility also. तो दोनों ही liquidation of a company में equal joint है. Because you are a joint owner of a company, so if you are liquidating a company, so in that case also you become the joint owner of the liquidation of the property. Okay, so company is real. Company can invest. Company has its own property. Then, so company has their own separate body that cannot be changed, that cannot be tailored for anyone else. Then, now, what they have said, they are saying that property, however, the shareholder may come to remain vested in the company. The company can convey, assign, mortgage. What do you mean by mortgage? This is the word you are using again first time. What do you mean by mortgage? Mortgage means कि कंपनी के कुछ एसेट्स अभी हम आपको दे रहे हैं फॉर रेजिंग ऑफ द फंड्स. ठीक है, हम इसको कह सकते हैं फंड रेज करने के लिए वी आर कीपिंग कंपनी एसेट्स. Then transferable shares. Not every share is transferred, but yes, this is also true. In company, there are few shares that can be transferred, especially in joint stock. Because in joint stock, the company initially started with the help of partnership. कंपनी किसकी हेल्प से स्टार्ट होती है? विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप. वी आर टू पीपल्स और हम दो लोग मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं. सो नाउ इफ आई वांट टू लिक्विडेट माय पार्ट, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज. सो द रेस्ट शेयर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. Then, so joint stock companies में this is a very common term. Okay, but in sole proprietorship, it becomes little bit difficult. That it is very difficult to find the next owner. If in the case of acquisition or in the case of merger, it is clearly defined. The person who acquires the maximum fund will be the maximum owner of the shares. But in the case of sole proprietorship, it becomes a little bit difficult. Clear? Moving further. The shares and debentures of a company shall move like property, transferable, and provided by article of a company. They provide liquidation to the investors and the stability of a company. They use a common seal. Since a company has no physical existence, the seal is everything. The company seals enter into the contract and both the agents, means both the owners, sign that association. The common seal has the legal signature of the company. The word the common seal is amendment in the year 2015. This particular word has been amended in the year 2015. So this is also one of the amendment. Then, now, very important point, types of a company. This is first, a company may be incorporated as one person. कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट हो सकती है? वन पर्सन कंपनी. लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू. ओके,
could be in the form of private or it could be form in the public. Again, it's not a limited company or neither limited, but both are guaranteeing that they are interested to work. Now they have a mutual agreement. They have their rights to control the company and to hold the company part. If company is having a subsidiary, then also they have a right to hold the subsidiary part. Then, like foreign companies, small companies, okay? Nidhi companies are like the charitable companies. Now, what is the basic formation by which we can incorporate 1%? We can incorporate 1% company. So, this is the statutory companies. Reserve Bank of India, the State Bank of India, Life Insurance, Industrial Finance, Unit Trust, State Financial are the most concerned with the public utility. कहाँ से पैसा इनको देती है? रेलवे को, गैस को, इलेक्ट्रिसिटी को, एंटरप्राइजेस को. Thus the provision of the Company Act 2013 यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से काम करती है. Then सेकेंड तरीका उसका कि आप कंपनी को रजिस्टर करा दीजिए अंडर द कंपनी एक्ट 2013. देन अगर आप ऐसा कराते तो कंपनी के लिमिटेड शेयर्स और राइट्स जो होंगे वो आपको कंपनी के लिए स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. विदाउट द स्पेसिफिकेशन और विदाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज और द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशंस आप कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. देन आप इसके लिए मीटिंग रख सकते हैं. आप बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बुला सकते हैं. आप ईयरली मीटिंग, क्वार्टरली मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग सब में अमेंडमेंट्स ला सकते हैं. लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको ये चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी. क्लियर? नाउ कंपनी लिमिटेड गारंटीड बाय द कंपनी. अब ये कैसी कंपनी है? दिस इज लिमिटेड बाय द गारंटी. अब फिर अगेन द सेम थिंग है. अगर दिस इज लिमिटेड बाय गारंटी तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए. सो अगेन दिस इज बीइंग मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट कंपनी इज लिमिटेड बाय द गारंटी. ओके. अगेन अनलिमिटेड कंपनी. This is point number 3. Unlimited company. So यहाँ पे क्या है कि कंपनी की कोई लिमिट नहीं. The company has no limit on the liabilities of the members. Then the company will extend the whole amount to the company debt and the liabilities, but he will entitled to claim the contribution from the other members. Definition खुद से ये बात है कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसा है? इन द फॉर्म ऑफ अनलिमिटेड कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स. द फर्स्ट वन वी हैव ऑलरेडी वन. बेसिस ऑफ मेंबर में फर्स्ट वाला पार्ट अभी हम कर चुके हैं, दैट इज 1%. और हमने इसमें समझ लिया कि कभी लिमिटेड लायबिलिटीज हो सकती हैं और कभी अनलिमिटेड लायबिलिटीज भी हो सकती हैं. 1% कंपनी का मतलब क्या हुआ कि सोल प्रोप्राइटरशिप. कैसी प्रोप्राइटरशिप है? सोल, एक ही इंसान कर रहा है. लिमिटेड कंपनी जहां पे राइट्स, लायबिलिटीज, सोल प्रोप्राइटर की क्या है? लिमिटेड है. अनलिमिटेड में वो अनलिमिटेड है. और गारंटी में उनके एसेट्स लिमिटेड. सो दीज आर द 3 वेज जहां पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 1, 2 एंड 3. आप कोई भी हाइब्रिड मोड पे इस तरह से अपनी लिमिटेड कंपनी को बना सकते हैं. देन
सेकेंड पॉइंट, ये तो फॉर्मेशन हो गया बेटा किसका, सोल प्रोप्राइटरशिप, किसका फॉर्मेशन हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ सेकंड पॉइंट इज डीलिंग कि व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल. सो अगेन दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. मिनिमम पेड अप कैपिटल वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. ओके, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म खोल रहे हैं तो अलग होगा. आपने माइक्रो फाइनेंस में भी देखा कि हम वो भी खोल सकते हैं, तो माइक्रो फाइनेंस में तो आपको बहुत कम पैसा चाहिए. बट यू नीड टू क्लेरिफाई कि व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस. Then, because you are the only authority, you are the sole proprietor. So you have to restrict your right to transfer the share. Because आप लिमिटेड हैं और आप सोल प्रोप्राइटर हैं. यू आर द ओनली पर्सन. जैसा मैंने पहले डिस्कस करा, यू कैन नॉट ट्रांसफर और यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर राइट टू ट्रांसफर दी शेयर्स. You have in one person companies, जो members की limit है that is 200, and this part we have already discussed in just a previous session right now कि इसमें जो members की limit है that is 200. Initially ये कितनी थी 2, but अभी कितनी हो गई है बढ़ा के, by the year 2013 200. Further, वो लोग भी सिंगल मेंबर कहलाते हैं या कॉमनली ज्वाइन करा सकते हैं अगर वो अकेले ही कंपनी में एम्प्लॉय या फिर कंपनी स्टार्टिंग से उन्हीं के नाम पर चले. डन. पॉइंट नंबर थर्ड. Point number third says that you can give an invitation to public to subscribe the securities of the. Initially beta paid up capital कम थी. Now it has been changed. Then now it has been changed and this is a change figure. इनिशियली कितने मेंबर्स थे आपके पास, 2. किसमें थे ये आपके, प्राइवेट. एंड 7 पब्लिक एंड 7 फॉर पब्लिक कंपनीज. Now, this is the first time जब हम पब्लिक कंपनीज को आप पढ़ेंगे. So before moving further, let me clear you one. पब्लिक कंपनीज बेटा वो होती हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एपेक्स इंस्टीट्यूशन होती है. Now, not a person is a apex institution, but गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is a apex institution. ये प्राइवेट नहीं हो सकते, इनमें कुछ मिनिमम नहीं होता. कम से कम 7 या उससे ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आपने प्राइवेट में पढ़ा दैट मिनिमम देयर आर 2, बट हियर इज द मिनिमम इज 7 members or more than 7 members. Then only they will called a public company. Then paid up share capital does not exceed 50 lakh of rupees or not should be more than 5 crore. 50 lakh मिनिमम है और 5 करोड़ मैक्सिमम है. कंपनी का टर्नओवर देखा जाता है, लास्ट प्रॉफिट्स देखे जाते हैं, and the most feasible is rupees 2 crore. Rupees 2 crores. Let me highlight these points.
50 lakh, 5 crore, 2 crores, and the maximum will be like 20 crores. Then अब इसका सेक्शन चेंज हो जाएगा बेटा, जैसे वो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 है और उसका सेक्शन एबीसी चलता है। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो दिस इज ऑलरेडी बिकम सेक्शन नंबर 8 है इंडियन कंपनी एक्ट में, बट सेक्शन गेट चेंज, सेक्शन विल बिकम सेक्शन नंबर 8। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोल, holding company and subsidiary companies. Holding companies are the companies in relation to one or other companies. So there are holding companies and there are subsidiaries companies also. Holding company ही subsidiary company को hold कर सकती है। सब्सिडरी कंपनी जैसे दूसरी कंपनी के साथ भी अपना काम कर सकती है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी चेंज्ड, उनके अपने अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों के अलग अलग होने चाहिए एंड पेड अप कैपिटल शुड रिमेन सेपरेट। अगर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपस में काम कर रही है, सो पेड अप कैपिटल फॉर वन एंड पेड अप कैपिटल फॉर टू बोथ आर सेपरेट। वी कैन नॉट से दैट दोनों की पेड अप कैपिटल सेम होनी चाहिए। क्लियर? सो मूविंग फर्दर, on the basis of listing in a recognized stock exchange, first and the most important thing is what do you mean by recognized stock exchange? क्या होता है? सेबी ने गवर्न करे हैं कौन से दो स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी एंड बीएसई। इंडिया में यही है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये कह रहा है कि अगर आप इसमें लिस्ट होना चाहते तो आपको क्या करना, तो मिनिमम आपकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, ऑलरेडी ये आपने अभी कवर अप कर। सेकेंड, एटलीस्ट फ्रॉम 3 years you are doing good, you are raising the profit and your balance sheet should be properly maintained. Then only you can get listed either in NSE or BSE. If it is first time, then it is known as IPO. And if you are doing each and everything from last 10, 20 years, so we can purchase the company share from the secondary market. Like SEBI, like SBI, HDFC बैंक, आप आज खरीदना चाहें तो आप आज भी इनके शेयर्स खरीद सकते हैं। MRF टैक्स, बट कुछ टाइम पहले LIC का IPO, तो sometime companies may introduce their IPOs also. Otherwise, in the rest of the cases, you can buy or sell the share from the secondary market. Clear? Moving further, these are the points that is being said right now. That you can list your company, but you should be properly registered. You should be properly listed. Then only your share can be traded according to Government of India. Then, not foreign companies. Can foreign company shares is listed in India? Can foreign company shares listed in India? Yes. Foreign company shares can also be listed in India. Like Nestle. है ना? Nestle is listed there
and we have taken example also of Nestle right now. In the previous session, we have discussed about the Nestle. तो Nestle का शेयर, Nestle आपकी इसकी होम कंट्री कहीं और है, India is not the home country. And you can take the examples of other also. There are n number of companies like Samsung. Done? तो आप बहुत सारी कंपनीज के एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल आपकी नोन है और वो यहाँ का इनिशियल्स नहीं है. क्लियर? मूविंग फर्दर. This is the thing that has been mentioned right. If foreign companies are also listed, they are also incorporated if they are working outside the India. But they need to be listed in the electronic form either in NSE or BSE. They can conduct the business activities also in India. They can have their associate company according to the Indian Company Act 2013. Now, what is joint venture? So, joint venture has a special significance. Why? Because not the one person, more than one person are working together. They are running the company. Okay? Dormant company. This particular topic we have completed in the previous session. The company is not working from last 2 years, but recently they have registered and they want their transactions to be active right now. So any company can get the help from the tribunals and they can again restart their business. Memorandum of Association. This is very important concept. Memorandum of Association is always act as a legal document in the formation and the registration of the company. It is the first and the most prior document required. It contained all the information related to the shareholders and the objective of the company. So, memorandum of a company is a basic document that could show you that why company is being formed. What is the minimum paid up capital? Who are the shareholders? Why required each and everything? So this is the minimum requirement and the basic requirement to start a company. Then now, memorandum of the association contain the name of the company. Then the mode of the company, like public and private. The state of the company, objective why company is formed, liabilities of the members of the company. In the case company has a limited liabilities, then the share liabilities of the company. So that in the case if company get wound up, so how could be the liabilities of a company can be fulfilled. Then article of association. This is the next and a very important part, article of association. So why we are requiring the article of association? Is a document that specifies the regulation, the company operations, and company has to define its purpose. This document basically lay out that how organization is going to accomplish their tasks. What are the name of the directors, the appointment letter of the directors, and the financial holdings of the directors. Clear? Regulation for management. Why you need to regulate? You need to regulate so that company can run properly, employ as well as
other person associated with the company get proper protection, proper security, and proper weightage to be a part of a company. So these are the points that we have discussed. Now point number third is prospect. Now what is prospectus? What is prospectus? It's nothing to like कि आप इसको रटा जाए. Prospectus क्या होता है? It's a small thin booklet that give you a glimpse of our organization. कि how organization is doing this job, how organization is doing each and everything. So this is a basic, a thin page that helps you how we can prospect our company features in front of others. So sometimes we are getting a prospectus of different universities also. So आप इसको advertisement के point of view से भी कह सकते. It is made in such a way the people get almost full knowledge about the organization. कि what are the products, what are the services, what is the curriculum of the particular organization, how they are working, why they are working, what is the vision, what is the mission, how we are associated with them, how we can get benefit from them. So prospectus, you can say it is an advertisement document also of a company that promotes you to be the part of the organization. Clear? So prospectus defines that any document is issued as a prospectus. The same word they have used. Advertisement. Clear now? Now this could be self-help groups. Okay? Or this could be through invitation. Prospects में क्या क्या होता है? हमने कहाँ इन्वेस्ट किया, कैसे करा, how the investment has been done on the behalf of the company, what is the ratio of the shares and debentures and other instruments. It should be signed, date, and should contain these informations. Who will be the banker? Who will be the trustee? Date of opening, date of closing, receipts, that is issues, bank account, separate details of the directors. So these are the details that are mentioned in the prospectus of the company. Authority, capital structure, public offer, objective of, capital structure, procedure, time schedule, authority, consent of the director. So this is very clear that three are the major instruments or three are the major documents before registering your company. What are they? Memorandum of association, article, and prospectus. Okay? Memorandum, article, and prospectus. Those these are the three basic documents that are being required before registering your firm. Clear to everyone? Moving further, they also give a minimum descriptions regarding the payable on the premiums, director remunerations, financial reports. It could be profit, it could be loss. जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट शो करे. देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है ना, आपको फ्रॉड इंफॉर्मेशन नहीं देनी है. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज समथिंग नोन एज फ्रॉड, है ना, मिस्टेक. ओके, अगर आप कोई चीज मिसप्रिंट करा देते हैं तो उसे आप क्या काउंट करेंगे? दैट इज ट्रीटेड एज फ्रॉड.
Clear to everyone? Now company management. कंपनी मैनेजमेंट में क्या क्या है? कंपनी की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द कंपनी. How company can establish their goals, how they can fulfill their goals. So these are the basic things that come under the company management. Okay. So the Supreme Court executive authority controlling the management and the affairs of the companies in the team director of the company, collectively known as board of directors. At the core of the corporate governance practice is the board of the director, which oversees how the management serves and protects the long-term interest in the stakeholders of the company. The institution of board of directors was based on the premise that the group of trustworthy and the respectable people should look after the interest of large number of shareholders who are not directly involved in the management of the company. The position of boards of the director is that of trust is being formed with the responsibility to act in the best interest of the company. Although the board comprises individual directors, yet the action and the deeds of director individually functioning cannot bind them unless particular directors has been specifically authorized by the board resolution to discharge certain responsibility on the behalf of the company. The Company Act 2013 does not contain an executive definition of the directors. Director can be an independent director, like he is a MD of a company. Okay, you can also say managing director of a company. It could be by board of members or it could be as a nominee by the previous director. So, independent directors should appoint a board person of integrity and possess relevant industrial expertise experience. Such individuals shall not promote or relate to the promoter of the company or its holdings, subsidiary or the associate company. Such individual must have materials during two immediately preceding years or during the current financial years of the companies. Okay, appointment of a director. Now, how one person can be appointed? तो initially आप एक चीज समझ लीजिए, there can be a journal provisions or the journal appointments. Then journal appointments is like the succession appointments or by the appointments of the nominee, where an individual person has been appointed as a nominee of the succeeded directors. Okay. So these are the journal provisions how a person can become or appoint as a director. Initially, सबसे important क्या है? There must be a journal meeting. Every member should be present and there must be a voting so that each and everybody get attracted or get intact in that meeting. Director identification number is compulsory. So you need to generate that number. Director should be a qualified person in the eyes of law. He should not be disqualified person in the eyes of law. A person appointed as a director shall on or before appointments gives consent. He should give consent in a physical form that I want to be a director of this particular company.
A consent should be given within 30 days. Within 30 days. And this is Company Act 1956, rule number 8, article number 5. So this is very important provision. If 30 days is completed, there is no grace day. The next director can be appointed. Okay? So qualification of the directors. So qualification of the director, the first qualification is the person should belong to a industry. Person should have maximum experience in the industry जहां पे अब वो नए तरीके से डायरेक्टर बनने जा रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, you want to appoint a director in a hospital. So person you are going to appoint should have maximum experience in hospital industry. If I want to appoint a director in an organization, in an education institute, so person should have worked maximum time in education institutes. Okay? Then only he or she can be a director. There must be a annual meeting. Person should be appointed. Everything should be get documented. Then only the person can be the director of this particular company. Now the question arises, whether the director has the retirement age or not. Yes. Yes. And this is also a person retired from the army can be a director. So that means in an organization you cannot be a lifelong director. Okay? Every time in 5 or 3 years, whenever the board sits and decides a new set of panel, you can be again reappointed. But you can be removed also. If you are not doing good, if you are not in the favor of the company, if your policies are not good, just like that UGC has made a norm for VCs and pro VCs. That after 3 or 5 years, VC need to be changed. Okay? So, director can be treated as trustee of the company? Yes. Because they witness that company should get maximum profit. The company should get maximum profit. Okay, so this Ramchandran Sugar Mills, this case is being already discussed in the initial cases. Company Act, where we have taken chapter number 1, Company Act. This is a very basic case जहां पे डायरेक्टर की पोजीशंस या डायरेक्टर इंटरकॉर्पोरेशंस के बारे में बताया गया. डायरेक्टर कैन एक्ट एज ट्रस्टी आल्सो. Director can be a partner also. Director can be your joint business person also. So it doesn't mean the director should be from a separate company. Director can be within a company also. Then, now the question arises, are the directors servant of the company? Now the word servant has been used, but we can use a better word, that is employee. हम लोग ने कल भी डिस्कस करा था in the previous in the initial sessions. Servants का यूज मत करिए, लेकिन according to the legal law, in the eyes of law, servants are the employees. If you are getting pay, you are getting wages, you are getting salaries, तो वो लेबर शब्द का यूज नहीं करते हैं, वो सर्वेंट शब्द का यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर्स के सर्वेंट हो सकते हैं? नो, नो. They are the professional men or the women who are hired from the director affairs of the company. So they cannot be a servant of the company. Rather, we can say they are the controller of the company. Then, can director act as an agent? Yes. Because director is
a person who is appointed by the apex body of the companies, and he is the person who is dealing with each and every member of the company. So director is a mediocre person between the apex institution and between the procedural institution. So yes, director can be a agent. That can be true. Director can be a trustee? No. No. Director cannot be a trustee. But they can treat it as trustee. That if you have a director that is from your family, so you can transfer some. ओके इनिशियली आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, डायरेक्टर बिल्कुल अलग पोस्ट है, ट्रस्टी बिल्कुल अलग पोस्ट है. अब इट कुड बी द पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है कि जिसने फंड लगाया वही डायरेक्टर बनना चाहता, बट दे हैव अ डिफरेंट पोस्ट. ओके, सो हम इनको मिला नहीं सकते. These are the totally different posts. और आप ये भी कह सकते कि every trustee cannot be a director और every director cannot be a trustee. Clear? Okay. Now moving further. Moving further, I will like to show you what are the amendment that has been made under the directorship. Registration form is there. Done? So every company has their different registration form. That is not a set format. But there must be a proper form. There must be a proper format to apply for the director. And I have always used this site, that is mca.gov.in, that is Ministry of Corporate Affairs. Then तो हम फिर से उसी साइट पे हैं और ये प्रॉपर गवर्नमेंट साइट. सो अगर मैं आपको ये साइट दिखाती हूँ तो इससे आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि who can be the director of the. Okay, so now you have to download these three forms. ये रूल है, ये प्रोसेस है. Take this and this. Done. Form 3 किसके लिए होते हैं? जो कि ऑलरेडी इंटेंडेड है टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी. This should be very clear. कंपनी एग्जिस्ट करती है, so that is DIR 3. Now what is DIR 6? If there is any change in DIR 3, so that particular form is known as DIR 6. Then, so you need to submit both the forms, DIR 3, in case everything is fine, or you can able to establish your company. Just give me a quick revision. What we have studied right now: sole proprietorship, partnership, joint ventures, article, memorandum, prospectus, and the director of the company. Before completing the session, I would like to say, whenever you are going to fill a form regarding a company, always go through the government site.
government portals. Read in each and every documents very carefully. Every document has an annexure. Annexure contains each and every information, whether you are qualified or you are not qualified. So before submitting the form, kindly cross-check whether each and every applicant status is properly filled or no. So this is your homework, or you can act as an assignment, and you can submit in me online also on my WhatsApp number also 972 008 333. If you have properly filled the form, kindly send me the WhatsApp or the image of that particular page. Thank you so much. Thank you for completing company app with me. Thanks.